हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार ओसीएस बाय रंजन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची आज 2023 सीपीटी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा बॉटनी तो आपण मैंने जदि सीपीटी प्रिपरेशन होती आउ टेस्ट सीरीज होगापी चाहूँगी तो हम सार को कांटेक्ट करेंगे। नंबर हूँ 7978405181 ठीक अच्छे। तो यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन पाइपर डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जॉइन है प्रिपरेशन करें। स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस इज डैश। टोबैको मोजाइक वायरस केस रे तार जो जेनेटिक मटेरियल थाए जमती आमर जेनेटिक मटेरियल होची डीएनए तो तांको केस रे जो जेनेटिक मटेरियल थाए सेटा कोडा भितर ऑप्शन ए देछि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन बी होछि डबल स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी होछि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन डी होछि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तार आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए के सॉरी ऑप्शन ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ए फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। गोटे फ्री लिविंग बैक्टीरियम जी कि फ्रीली लिविंग कर कैपेसिटी थी से नाइट्रोजन को फिक्स कर पार। ऑप्शन ए देछि राइजोबियम, ई कोलाई, आजेटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस। मन रखिए आजेटोबैक्टर होची गोटे एमिति बैक्टीरिया जी कि फ्री लिविंग थाए आउ ता पाखरे कैपेसिटी थाए नाइट्रोजन को फिक्स करबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स ऑफ सम फिलामेंटस cyanobacteria that are specialized for nitrogen fixation are called dash। cyanobacteria किछि थांती जहाँ पाखरे फिलामेंट प्रेजेंट थाए से जो कहला सेल्स ऑफ सम फिलामेंटस cyanobacteria स्पेशलाइज्ड फॉर तांक पाखरे कैरेक्टरिस्टिक्स होची स्पेशल कैरेक्टर होची से नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर परिवे। तो से सेल रो ना कोन ऑप्शन ए देछि हेटेरोसिस्ट, वॉल्यूटिन, मेजोजोम्स एंड फाइकोबिलिजोम्स। ऑप्शन ए होची राइट आंसर हेटेरोसिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पाल्मेला स्टेज इज सीन इन डैश। पाल्मेला स्टेज टा को ऑर्गेनिज्म पाखरे देखा जाए क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, इडोगोनियम, कोलेचेट। तो आंसर होची ऑप्शन ए क्लामाइडोमोनास तांक पाखरे पाल्मेला स्टेज देखा जाय थाए। नेक्स्ट सिस्टोकार्प इज फॉर्म्ड इन डैश। सिस्टोकार्प कोड फॉर्म्ड होता है भाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, सार्गासम। सिस्टोकार्पटा फॉर्म होता है कोठी ऑप्शन सी होची राइट आंसर पॉलिसिफोनिया मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन डैश। माइकोराइजा कहार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बुझे थाए आल्जी ब्रायोफाइटा, आल्जी फंजाई, फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स, आल्जी रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। मन रखिए माइकोराइजा रिफर्स टू माइकोराइजा symbiotic relationship between fungi and root of higher plants ठीक अच्छे। सिम्बायोसिस माने होची कोन जो सहजीविता जड़े आउ जनकर उपकार करुथिबे तो सही रिलेशनशिपटा माइकोराइजा जोटा कि देखा जाए क्या पाखरे फंजाई आउ प्लांट हायर प्लांट रो रूट रे देखा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रुटिकोस लाइकेन्स। फ्रुटिकोस लाइकेन नो एग्जांपल कोटा आर आंसर हम ऑप्शन ए होची राइट आंसर मन रखि देबे क्लैडोनिया। क्लैडोनिया होची आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 aflatoxin is produced by the species of dash। aflatoxin is produced by को species रे aflatoxin टा produce होता है पेनिसिलियम, फ्यूजारियम, एस्पेरिजिलस एंड क्लेविसेप्स। आर आंसर होची एस्पेरिजिलस मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 yearly blight of potato is caused by dash। yearly blight of potato कहा द्वारा कॉज होता है आर आंसर मन रखिबे yearly blight potato केवल कॉज होता है कहा जोगु नल्टेमारिया सोलेनी द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन
Pseudoelaters are found in the sporophyte of dash. Pseudoelaters are found in sporophyte of Anthoceros, Markansia, Funaria, Rixia. Our answer hoji Anthoceros. Next question. 11 number. A cavity formed by the disintegration of protoxylem trachid in equisetum stem is called as. A cavity formed by disintegration of protoxylem trachid in equisetum stem is called central cavity, air chamber, vallecular cavity or carinal cavity canal. तो एटा को आंसर होची कोन 11 नंबर रो ऑप्शन डी होची राइट आंसर carinal canal. Next, Gatling leaf traces are the characteristic feature of the stem of option A the cycas, option B होची pinus, ginkgo, option होची netum. तार आंसर होची option A cycas. मन रखिबे. Next 13 number question. Which of the following is the oldest era in the geological time scale? Geological time scale जो अच्छी विभिन्न प्रकार era हो इपोक हो एगुड़ा सब डिस्क्राइब करता है तो आ भितर देइची चारटा ता भितर सबठारु ओल्डेस्ट कोटा सिनोजोइक, मेजोजोइक, पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक. मन रखिबे आर्कियोजोइक होची आ भितर सबठारु ओल्डेस्ट era. Next question number 14. The lateral root in angiosperms are generally originated from. Angiosperm मानकर जो lateral root थाए सेटा कोठु originated हेइ थाए एपिब्लेमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स. आर आंसर हबो पेरिसाइकल. मन रखिबे पेरिसाइकल रु ही angiosperm मानकर lateral root ता originate करथाए. Next 15. Formation of distinct annual rings during secondary growth of stem mainly depend on gas. कहाँ पर depend होता है इटा? Formation of phylogen, differentiate rainfall pattern, contrasting seasonal variation, more or less uniform climate throughout the year. Our right answer होची option number C, contrasting seasonal variation. बुझिला. Next होची 16. Interxylary phloem is formed due to abnormal behavior of normal cambium. Option C होची anomalous behavior of abnormal cambium, anomalous position of cambium, formation of accessory strip of cambium. Answer होची option number B. Interxylary phloem formed due to anomalous behavior of abnormal cambium. Next 17. Which one plays a key role in harvesting light energy? Light energy harvesting रे के मेन रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट. आंसर होची क्लोरोप्लास्ट. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The Abyssinian center of origin of cultivated plants includes option A देइची मेक्सिको, कोस्टारिका and Ethiopia, Eritrea or Afghanistan and Uzbekistan, Assam and Burma. Our option होची B होची right answer Ethiopia and Eritrea. Next question number 19. The generic name of pearl millet is dash. मन रखिबार right answer होची पेनिसिटम. pearl millet रो right answer होची पेनिसिटम. Next question 20. Linseed oil is a drying, semi-drying, non-drying essential oil. मन रखिबे होची drying oil. Linseed oil होची drying oil. Next question number 21. Morphine obtained from dash. Morphine टा कोठो obtain हेइथाए एटा मन रखिबे डायरेक्ट क्वेश्चन papaver somniferum. मन रखिबे त नाटा papaver somniferum. Next question number 22. Para rubber is obtained from dash. एटा भी गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिबे हेबिया ब्रासिलेंसिस रु पारा रबर टा हमरा obtain हेइथाए. Next question. Which of the following is a polysaccharide? आ भितर polysaccharide किए ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और ग्लाइकोजेन.
तार राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन होची राइट आंसर। तो ग्लाइकोजेन होची गोटे पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय इट्स पर्टिकुलर आर ग्रुप अमीनो ग्रुप गोटे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड डिटरमाइंड बाय सब अमीनो एसिड मानकर यूनिक प्रॉपर्टीटा को ग्रुप द्वारा डिटरमाइन होता है तार आर ग्रुप द्वारा मन रखिए। नेक्स्ट 25 द पार्ट ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट वैरीज अमंग डीएनए मॉलिक्यूल इज इट्स डीएनए मॉलिक्यूल को पार्टा वैरी होता है डीएनए मॉलिक्यूल ठू तो ग्लिसरल अटैचमेंट नुह सुगार नुह फॉस्फेट नुह तार नाइट्रोजन बेसिसटा हेल्प करे गोटे डीएनए मॉलिक्यूल को आ गोटे डीएनए मॉलिक्यूल सहित वैरी करबा। Next 26 the active site of an enzyme is formed by a few of the enzymes. The active site of an enzyme formed by a few of the enzymes सेगुड़ा किए R group of the amino acid or amino group of the amino acid carboxylic group of amino acid or exposed upper bonds. Option B होची right answer amino groups of amino acids. Next which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? को स्ट्रक्चरटा प्रोकैरियोटिक सेल ले फाउंड ही न थाए सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और राइबोसोम। ऑप्शन सी होची राइट आंसर न्यूक्लियर एनवेलप। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल प्राक नेस्टिव कोष मानकरे कोटा देखा जाई न थाए सेल वॉल थाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए राइबोसोम भी प्रेजेंट थाए किंतु न्यूक्लियर एनवेलपटा न थाए। नेक्स्ट 28 when a lysosome fuse with phagosome it result in the formation of dash जेतेबेले लाइसोजोम सहित फागोजोमटा फ्यूज हो जाए फॉर्मेशन कौन होता है ऑटोफेजिक वैक्यूल और रेसिडुअल बॉडी प्राइमरी लाइसोजोम सेकेंडरी लाइसोजोम मन रखिए यार आंसर होची जेतेबेले लाइसोजोम फागोजोम सहित फ्यूज हो जिवो सेकेंडरी लाइसोजोम प्रोडक्शन हो फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट 29 out of a population of 1600 F2 individual of a cross between yellow round and green wrinkle pea plant the number of yellow wrinkle seeds would be 300 400 800 or 1600 right answer होची 300 मन रखिए। next question number 30 when Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parent it is called as dominance codominance incomplete or a polygenic inheritance our answer होगा codominance। next 31 experimental confirmation of the chromosomal theory of inheritance was done by Morgan मतलब chromosomal theory of inheritance done by एक्सपेरिमेंटली से कन्फर्म देते क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस उपरे तो से होजन के ना मॉर्गन। नेक्स्ट 32 क्रॉसिंग ओवर अकर व्हेन जेनेटिक इनफॉरमेशन इज एक्सचेंज बिटवीन क्रॉसिंग ओवर केतेबेले होता है जेनेटिक इनफॉरमेशनटा कहा भितर एक्सचेंज हेले आमे कहबा कि सेटा को क्रॉसिंग ओवर बोली क्रोमाटिड और क्रोमोसोम नुह कि लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम नुह क्रोमाटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम रो क्रोमाटिड भितर जितले जेनेटिक इनफॉरमेशनटा एक्सचेंज होबो ताको आमे क्रॉसिंग ओवर बोली कहबा। नेक्स्ट 33 which of the following chromosomal changes is usually most damaging when it is in homozygous condition तो यहाँ गोटे टाइप म्यूटेशन डिलीशन डुप्लिकेशन और ट्रांसलोकेशन इनवर्सन यहाँ हूँ डैमेजिंग टाइप डिलीशन हूँ डैमेजिंग टाइप ठीक अच्छे। तो ये बाकी जी रहा डुप्लिकेशन ट्रांसलोकेशन हो इनवर्सन हो ये चेंजेस हम पोजिशन हो चेंजेस हम किंतु डिलीशन हूँ गोटे टाइप म्यूटेशन जो टोटाली डैमेज हम होमोजाइगस कंडीशनटा ठीक है होमोजाइगस कंडीशन में ये डिलीशन हेले जाना जे सेठी डैमेज होची। नेक्स्ट 34 when a mutation is limited to the substitution of one nucleotide pair for another it is called dash ताकू हमें को टाइप रो म्यूटेशन कहबा ट्रांसलोकेशन पॉइंट म्यूटेशन सुगर फॉस्फेट डिलीशन बेस इनवर्सन आंसर होची पॉइंट म्यूटेशन।
Next 35, the experiment in which it was shown that DNA is a genetic material in bacteriophage. तो से एक्सपेरिमेंट ना कौन डीएनए टा हूँ जेनेटिक बैक्टेरियाफेज जेनेटिक मटेरियल को एक्सपेरिमेंट रे जणा हेतला मन रखिबे हार्से चेस एक्सपेरिमेंट एथिरे जणा पड़तला कि डीएनए होच गोटे जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टेरियोफेज. Next 36, if the sequence of base along one side of the DNA molecule is AAGCT, जदि गोटे sequence टा AAGCT हैला, then the complementary sequence of the base side of the DNA molecule, say DNA molecule ला complementary A रा complementary क्या होगा नियत भावे T. ठीक अछि तो आर राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन, in DNA replication the helix is unwound by which type of enzyme? DNA replication बेले जेतबेले दीटा स्ट्रैंड टा कोन हेतिबो से जोड़ी ही जाइतिबो द हेलिक्स अनवुंड माने खोली थाए को एंजाइम द्वारा मन रखिबे हेलिकेज एंजाइम द्वारा. ठीक अछि. नेक्स्ट 38, the first event in translation is the binding of mRNA leader to the dash. The translation होची कोन translation is the process in which protein is synthesis protein टा synthesis होई थाए ताको हमें कोन कहताउ तो protein टू जेतले अमीनो एसिड टा synthesis हबो ताको हमें कोन कहताउ ट्रांसलेशन कहताउ ना नहीं. तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होची प्रोटीन नु आरएनए हबो प्रोसेस को कहा जाय कोन ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए रु जेतले डायरेक्टली कोन प्रोड्यूस होय अमीनो एसिड प्रोड्यूस हुए ताको हमें कोन कहताउ ना ट्रांसलेशन कहताउ. तो सही प्रोसेस से कहूची द फास्ट इवेंट इन ट्रांसलेशन इज द बाइंडिंग. सेतरे कोन हेता एमआरएनए टा जाय कि कहा सहित बाइंड हेता है सेटा जाय कि स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट सहित बाइंड हेता है. मन रखिए पॉलीजोमल कोर नुह लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट नुह सेटा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट सहित जाय कि अटैच हेता है. Next, of the 64 codon how many codes for amino acid मन रखिए 64 भितर amino acid पाई कोड करि थांती 61 codon. ठीक अछि. Next 40, if a cell were treated with a chemical that block nucleic acid synthesis, जदि गोटे सेल टा treated with a chemical गोटे chemical दर मन कर chemical ताको ट्रीट करूथिबो आउ से chemical टा ही nucleic acid synthesis को ब्लॉक करिवार कैपेसिटी रखुथिबो, which of the following process would most likely be affected first? ताहले को प्रोसेस टा अफेक्ट करिवो सेल ले डीएनए रेप्लिकेशन टीआरएनए सिंथेसिस एमआरएनए सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस. आंसर हबो डीएनए रेप्लिकेशन मन रखिबे. नेक्स्ट 41, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज डैश. सबठारु स्टेबल इकोसिस्टम काहा कहै छै फॉरेस्ट डेजर्ट माउंटेन ओशन. मन रखिबे ओशन होची गोटे स्टेबल इकोसिस्टम. नेक्स्ट 42, soil particle arranged in order of increasing size are जो soil particle टा arrange होइथांती order रे increasing size रे ताको कोन कहै छै मन रखिबार आंसर होची clay silt and sand. एटा होची order increasing order soil particle ला. Next 43, study of interrelationship between environment and community. एटा होची सबठारु रिपीटेड क्वेश्चन देखिबे सब प्राय तो ए क्वेश्चन टा आसी बहुत वर्ष तो यहाँ क्वेश्चन को मन रखिए इंटर रिलेशनशिप एनवायरनमेंट और कम्युनिटी भितर इंटर रिलेशनशिप जोटा ताकू स्टडी करिवो कोन कहा जाय सीन इकोलॉजी कहा जाय. नेक्स्ट निमाटोफोर आर फाउंड इन निमाटोफोर टा कहा पाखरे देखा जाय हालोफाइट्स जेरोफाइट मेजोफाइट हाइड्रोफाइट हालोफाइट मान पाखरे निमाटोफोर देखा जाय एटा को मन रखिए. नेक्स्ट 45, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज. एनर्जी पिरामिड टा पॉन्ड इकोसिस्टम रे सबले इन्वर्टेड हेतिबो मन रखिए. नेक्स्ट 46, which of the following statement is not true? कोटा ट्रू नुह. In a taxonomic key the two consecutive couples should not begin with the same word. एटा होची राइट. नेक्स्ट ऑप्शन भी होची ओवरलैपिंग रेंजेस शुड बी अवॉइडेड. एटा राइट. In a key couplet may be numbered a letter or lettered.
एटा राइट किंतु एटा ट्रू नुह द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लीड of the couplet should not be identical एटा होची ट्रू नुह next 47 when one specimen is designated by the author as the nomenclature type it is known as dash ताको कौन कहा जाए syntype isotype नुह neotype नुह और आंसर अब holotype next 48 which of the following structures are not present in the florets of the plant belonging to the family Poaceae तो आर आंसर होची स्यूटेलम होची स्क्यूटेलम होची आर राइट आंसर मन रखिए पोएसिया फैमिली जो माने जाउचंती तो तांकर आंसर पर स्क्यूटेलम नेक्स्ट 49 द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द हर्बारिया ऑफ द वर्ल्ड इज दैट ऑफ हचिनसन बेंथम एंड हुकर लिनियस टैक्टाजांस तार आंसर होची बेंथम and Hooker. Next 50 considering the most commonly seen pleiody label of endosperm if the endosperm cell of an angiosperm has 24 chromosomes the number of chromosomes in its megaspore shall be our answer above 16 one rakhibe next 51 the entry of pollen tube through the micropyle is known as porogamy eta mon rakhibe entry of pollen tube through the micropyle is known as porogamy next 52 hoji apomixis in plant means development of a plant without fusion of gametes seta ko apomixis kaha jaye apomixis in plant means development of a plant apomixis mane hoji without gamete re jo plant ta develop hoba fusion hei nathiba gamete re tako ame apomixis कहबा next 53 transfer of the pollen grain from one flower to another flower of the same plant is called gitnogamy eta ko मन रखिए gitnogamy तो कहा जाए same plant रो तल तक gitnogamy कहबा next 54 which of the following statement is correct endothecium produce the microspore eta false tapetum nourish the developing pollen tapetum होची जेतले pollen को से developing pollen को सेटा nourish करिवो tapetum hard outer layer of pollen is called intine not eta true नुह sporogenous tissue is haploid eta भी true नुह केवल correct होची कोटा ना tapetum nourishing the developing pollen next 55 the metal ion involved in stomatal regulation is dash को metal ion टा stomatal regulation help करता है potassium मन रखिए next 56 spraying of phenyl mercury acetate on leaves increase the rate of transpiration decrease the rate of transpiration increase the rate of guttation increase the rate of water absorption the spraying of phenyl mercury acetate on leaf से कौन करिवो ना decrease करिवो rate of transpiration ठीक अछि next 57 a plant require magnesium for plant टा magnesium require करता है कौन पाई protein synthesis पाई chlorophyll synthesis पाई cell wall development or holding cells together तो आंसर होगा chlorophyll synthesis next 58 apical dominance is caused by apical dominance टा को हार्मोन द्वारा कॉज होता है मन रखिबे तो हार्मोन जो फंक्शन सेगुला तो डिफरेंट ताको मन रखि पड़िबो तो ऑक्सिन एटा होची फंक्शन सेटा apical dominance शो करे था जिब्रेलिन काइटिन काइनेटिन और ABA तो एटा नुह next 59 which of the following hormone play an important role in ripening of fruit फल पाचिबारे को हार्मोन टा हेल्प करता है एथिलीन मन रखिबे next by which of the following process the seed absorb ample of water and dormancy is overcome scarification एटा होची गोटे प्रोसेस जो थ्री की seed absorb ample of water and dormancy is overcome ठीक अछि vernalization नुह stratification नुह कि devernalization नुह next 61 induction of flowering by low temperature is called dash induction of flowering by low temperature is called vernalization मन रखिबे induction of flowering by low temperature is called vernalization photoperiodism नुह कि running नुह कि cryobiology नुह सेटा होची vernalization
Next 62, the organelles involved in photorespiration are dash. को organelle टा photorespiration में involved था mitochondria, chloroplast, ribosome और mitochondria, chloroplast, peroxisome, mitochondria, peroxisome, glycoxisome और mitochondria, nucleus, ribosome. Confuse हेबेनी right answer होची कोटा mitochondria, chloroplast और peroxisome. एटा photorespiration में यूज होता है. Next 63, the non-cyclic photophosphorylation result in the production of ATP, NADPH, ADP, ATP and NADPH. Our answer होची ATP and NADPH. Next 64, Crange anatomy is usually associated with dash. Crange anatomy कोठे associated होता है C3 plant रे, C4 plant रे, CAM plant रे और C3 C4 intermediate plant. Our answer होची Crange anatomy associated होता है कोठे ना C4 plant रे. Next 65, Krebs cycle occur in. Krebs cycle टा कोठे होता है माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन ने, माइटोकॉन्ड्रिया रो आउटर मेम्ब्रेन ने, माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस रे कोठे होता है मन रखिए माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स से होता है क्रेब्स साइकिल. नेक्स्ट, द रूट नोड्यूल्स फॉर्म बाय लिगुमिनस प्लांट हैव ए रेड पिगमेंट. रूट नोड्यूल फॉर्म बाय लिगुमिनस प्लांट ता पाखरे गोटे रेड पिगमेंट थाए ताको कोन कुहा जाय हिमोग्लोबिन तो नुह फायोकोएरिथ्रिन नुह सेटा होची लेगेमोग्लोबिन एंथोसियानिन नुह लेगेमोग्लोबिन होची राइट आंसर. नेक्स्ट 67, इन फीडबैक इनहिबिशन as metabolic pathway is switched off by dash a rise of temperature अधिक नुह lack of substrate नुह accumulation of end product होबो राइट आंसर. competition inhibition भी नुह. नेक्स्ट, TI plasmid used in genetic engineering is obtained from. TI plasmid जोटा genetic engineering रे यूज होता है सेटा को कोठी obtain करा जाए मन रखिबे agrobacterium tumefaciens. Next 69, ability of a plant cell to regenerate into complete plant is known as pluripotency नुह एटा होची totipotency, tissue culture की cell cloning नुह. ability of a plant cell to regenerate into complete plant. गोटे प्लांट सेल रो ability थिबो regenerate हे जिवो गोटे complete plant को सेटा को totipotency कहा जाए. Next 70, gel electrophoresis is used for the. gel electrophoresis टा कौन पे यूज होता है मन रखिबे एटा होची separation of isolation of DNA fragment. DNA fragment रो isolation को isolation आउ separation करिबारे हेल्प करे कि gel electrophoresis. Next 71, restriction enzyme ECORI cut the DNA between G and A only when the sequence in DNA is sequence जेतले GAATTC थिबो सेतेबेले कोन करे ना restriction enzyme ECORI DNA को G आउ A स्ट्रैंड भितरु ताकू कट करि थाए. नेक्स्ट 72, which of the following is not a measure of central tendency. central tendency रो मेजर जो कोटा नुह मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन और आंसर होची स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट 73, which of the following is an example of in situ conservation of biodiversity. तो in situ conservation of biodiversity रो example होची botanical garden नुह, zoological garden नुह, gene bank नुह एटा होची आंसर biosphere reservoir. नेक्स्ट 74, chemical potential of pure water is मन रखिबे pure water रो chemical potential होची 0. एटा गोटे repeated question मन रखिबे एटा को बार बार क्वेश्चन सब जो गुड़ा रिपीट होची रिपीटेड क्वेश्चन जो गुड़ा मन रखिबे. नेक्स्ट 75, which of the following is an asexual reproductive structure in bacteria. बैक्टेरिया रो asexual reproductive structure जोटा ताको कौन कहा जाए एकिनेट, ऑटोस्पोर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पर्म एटा होची एंडोस्पोर. नेक्स्ट 76, when a sporangium develop from a single initial cell it is called dash. जेतले गोटे sporangium टा गोटे सिंगल सेल डेभलप हुए ताको कौन कहा जाए लेप्टोस्पोरांजिएट कहा जाए. ताको मन रखिबे जेतले गोटे स्पोरांजियम डेभलप करथिबो गोटे सिंगल इनिशियल सेल रो ताको लेप्टोस्पोरांजिएट कहा जाए. 77, enzymes having different molecular forms
बट सेम स्पेसिफिसिटी जदि गोटे दुईटा एंजाइम पाखे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म थिबो किंतु स्पेसिफिसिटी तांकर सेम थिबो ताकू को एंजाइम कहा जाए मन रखिए ताकू आइसो एंजाइम कहा जाए आलोस्टेरिक नुह को एंजाइम नुह कि हलो एंजाइम नुह ताकू आइसो एंजाइम कहा जाए जहाँ पाखे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म थिबो किंतु सेम स्पेसिफिसिटी थिबो ताकू आइसो एंजाइम कहा जाए थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनाप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ डैश सिनाप्सिस क्या कहा जाए पेयरिंग किए पेयरिंग हेले ताको सिनाप्सिस कहा जाए मन रखिए सिनाप्सिसटा क्रोमोजोम पाखे देखा जाए ना नहीं तो होमोलोगस क्रोमोजोम जितेबाला पेयर होता ताको सिनाप्सिस बोली कहा जाए। नेक्स्ट द टर्म क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेसिंग ऑफ क्यूरिंग होची कौन प्रोसेसिंग टी प्रोसेसिंग को कहा जाए क्यूरिंग एटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट 80 सोरिया रोब्यूस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली सोरिया रोब्यूस्टा को फैमिली बिलोंग्स करता है एटा को मन रखिए एटा होची डिप्टेरो कार्पेसिया फैमिली को बिलोंग करता है ठीक है जी। नेक्स्ट सरीगला क्वेश्चन 2023 तो आउथरे कही दूसरी जदि आपण मैंने सीपीटी प्रिपेरेसन होचंती ताहले हम सार को कांटेक्ट करंतु निहाती भाबे बेस्ट प्रिपेरेसन आपण को मिल पारिबो प्रिपेयर होबार आपण मन को हेल्प भी मिल पारिबो ता सहित टेस्ट सीरीज भी नहीं पारिबे डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी तो बाकी वीडियो गुड़ा भी देखिदेवे आउ जदि व्हाट्सएप आउ टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते लिंक अच्छी जॉइन हो जातु वीडियो भल लगी लाइक करने को जमा भूलें। नमस्कार जय जगन्नाथ।